Welcome back, viewers. You're watching The Savera and I'm Shefali. A tragic incident occurred in Jaipur's Subhash Chowk area near Ramkumar Dhaval Street, when a portion of four-story residential building suddenly collapsed, claiming the lives of 2 people and injuring several others. Authorities have attributed the collapse to structural weakening caused by prolonged rainfall and persistent dampness over the past few days. According to Deputy Controller of Civil Defence, Amit Sharma, the building had been severely affected by continuous exposure to rain, which has eroded the limestone structure and compromised its stability. The police and civil defence teams received emergency calls around 1:15 to 1:30 am and immediately rushed to the site to begin rescue operations. The building housed around 19 tenants, most of whom were migrant labourer families. ADCP North Durg Singh Rajpurohit confirmed that 7 people sustained injuries, with 2 victims, 33-year-old Prabhat and his 6-year-old daughter Pihu, succumbed to their injuries. Prabhat's wife Sunita and 4 other individuals were also seriously injured and are receiving medical treatment. Rescue teams, including the State Disaster Response Force and civil defence personnel, worked through the night to extract 7 people trapped under the debris. The incident underscores the risk posed by neglected and aging infrastructure, particularly during adverse weather conditions. Continuous heavy rainfall in Jaipur appears to have accelerated the weakening of the building, highlighting the urgent need for regular maintenance and preventive inspections of old residential structure. Medical teams are currently treating the injured while authorities continue to assess the stability of nearby buildings and the extent of damage caused by recent heavy rains. Emergency response units remain on high alert as rescue operations are ongoing. Meanwhile, the Indian Meteorological Department has issued a fresh rainfall alert for several regions in India, including heavy to extremely heavy rainfall in Gujarat, Surat, Kutch, East Rajasthan, Southwest Rajasthan and other parts of the country from September 6 to 10. The IMD warned of isolated heavy rainfall over West Rajasthan on September 8, Uttarakhand on September 6 and 7, Himachal Pradesh on September 8 and 9, Haryana, Chandigarh and Delhi from September 8 to 10, Punjab on September 10 and East Uttar Pradesh on September 10 and 11. This latest alert reinforces the heightened risk to vulnerable structures amid the ongoing monsoon season, urging residents to exercise caution and adhere to official warnings. रात को 12:15 बजे हादसा हुआ है। ये मकान काफी जर्जर था और ये मकान क्या था सर, पहले काफी हिंदू लोग थे, अब एक मुस्लिम बंदे ने खरीदा है और उसने रिपेयर तो कराया नहीं, काम कराया नहीं, काफी खंडर हो चुका था, जर्जर अवस्था में था। तो उसने पैसों के लालच में खुद की कमाई के लिए मकान में किराएदार भर रखे थे काफी लोग। अब गरीब मजदूर परिवार हैं। 4 दीवारी में काफी मकान अपने को जर्जर मिलेंगे और जिनका संज्ञान निगम को भी लेना चाहिए, तो वो इस दिशा के अंदर कोई कदम नहीं उठा पा रहे। अब इसमें हो सकता है कि उनका कुछ हित हो, इस वजह से वो नहीं ले रहे, लेकिन काफी मकान ऐसे हैं जो जर्जर है, जिनके विषय में सोचना चाहिए। कुछ मकान मालिक किराएदार के ये 12:30 बजे की घटना है, 12:15 साढ़े 12 बजे की घटना है रात की। और जो 12:15 साढ़े 12 बजे की घटना है, उसके बाद में इसमें 2 लोगों की तो कैजुअलिटी सामने आ रही है और 5 लोग वहां पर हॉस्पिटलाइज्ड है। वैसे आपको पता ही है 2-3 दिन से बारिश थोड़ी ज्यादा चल रही थी, तो ये वॉल सिटी के अंदर पुराने मकान है और रात को करीब 1:15 बजे के बीच में पुलिस के पास सूचना आई थी, तो पुलिस के मौके पे सभी अधिकारी मौजूद हो गए थे। सिविल डिफेंस को बुलाया गया था। चूंकि रेस्क्यू करने के लिए रास्ता दूसरा नहीं था, तो इस मंदिर साइड के रास्ते से जिधर से आप आए, इधर से रेस्क्यू किया गया था। इस मकान में करीब 19 लोग रह रहे थे किराए पे। 19 में से 7 इंजर्ड हुए, उसमें से 2 की डेथ हुई, एक प्रभात नाम से और एक उसकी बच्ची की डेथ हुई। That's all for now in this update. Stay tuned to The Savera, download the app and follow us on various social media platforms.